चलो आज आम कौन पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन है आस कितना से जगह अच्छी आगे बस देखा ये 5 जन बसुँच आउ बसनी से पट सैड्रे ही बस से बस पछे से जो चेयर अच्छी से शुण सरला पढ़ा देख आज आम पढ़ा आम जब पूर्व पढ़ी सेंटेंस और प्रपोजिशन भितर डिफरेंट कौन एंड नेचर ऑफ कपुला कौन आम गोटे केमिति माने नॉर्मल सेंटेंस को एनालिसिस करूछन कौन प्रपोजिशन बा एनालिसिस ऑफ लॉजिकल प्रपोजिशन को पढ़ी तो आज आम पढ़ा कौन ना क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन प्रपोजिशन को बहुत सारा स्टैंड पॉइंट रु डिफरेंट प्रपोजिशन बोली क्लासिफाई करा जायछि है कौन कहि क्लासिफाइड फ्रॉम डिफरेंट स्टैंड पॉइंट प्रपोजिशन को कौन कहि डिफरेंट स्टैंड पॉइंट रु प्रपोजिशन को डिवाइड कराई तो कौन ना किछि प्रपोजिशन में भी माने एठी अछि केते प्रकार 7 प्रकार प्रपोजिशन अछि सेटा पढ़िबा है तो लिखो द प्रपोजिशन are various kind and they are may be classified from different standpoint The following are the standpoint of classification of proposition. Classification of proposition. आमे किछिटा देखिबा कौन प्रपोजिशन को डिवाइड कराई छी. फर्स्ट कौन अछि according to composition according to quality according to quantity according to modality according to relation according to significant imports એટલે કે દઉં છું 6 રે according to can't import significance लिखिबो CANC significance import देखला प्रपोजिशन को डिफरेंट स्टैंड पॉइंट रो प्रपोजिशन को ए सब वे रे माने क्लासिफाइड कराई छै. प्रथमे कोन कहै छै ना कोन कहै छै अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू क्वालिटी अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू मोडालिटी अकॉर्डिंग टू रिलेशन बा अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंस और इंपोर्ट तो यही प्रपोजिशन को पुणी डिवाइड कराई प्रथम यही प्रपोजिशन तुम अच्छी से प्रपोजिशन में पुणी ताको डिवाइड कराई तो आम फास्ट पढ़ा अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन दृष्टि प्रपोजिशन को केते भाग में डिस्ट्रीब्यूट करा जायछि आ से गुड़िक कौन कौन बुझीगला तो लिख तो
तो सरी के आगे ये लिख देल तब लिख अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन तो लिख द प्रपोजिशन आर क्लासिफाइड according to composition. The proposition are classified according to composition into simple and compound proposition. Classified into simple and compound proposition. Simple and compound proposition. Simple and compound proposition कौन कहा जाए ना according to composition बा composition दृष्टि proposition को दुई भाग रे डिस्ट्रीब्यूट करा जाए गोटे होची कौन कौन कहली simple and compound तो तमे मैंने जानी छ simple proposition कौन and compound proposition कौन जानी छ कि नहीं जानी छ simple proposition कहले कौन जदि मु तुमको होची थर राम इज ए गुड बॉय एटा गोटे सिंपल प्रपोजिशन तमे जदि सेथिरे आउ किछि प्रपोजिशन जोड़ी दोछ ताले सेटा कंपाउंड हे जाउची तमे एटा को ही सिंपल और कंपाउंड कहछे तो सेटा में लिखिबा तो लिखो ए सिंपल प्रपोजिशन इज वन A simple proposition is one that express a relation Simple proposition is one that express a relation between a single subject and predicate. Single subject and predicate. तो पूछवा को किछ नहीं सेटे अच्छे के किछ पूछवा को एटा नहीं बोर्डटा कोठी थिबा देखो से कपड़ा साइड रे अच्छे नहीं सुन जाओ ना टिके नहीं कौन लिखिल द प्रपोजिशन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन गोटे सिंपल एंड कंपाउंड सिंपल प्रपोजिशन होचे सेटा जार गोटे सब्जेक्ट एंड गोटे प्रेडिकेट थिबो ताले हमें ताको कौन कहबा सिंपल प्रपोजिशन कहबा तो एग्जांपल नहीं जिबा ऑल मेन आर मोर्टल तो एग्जांपल लिखो ऑल मेन आर मोर्टल some students are good some students are good flowers are beautiful etc देखो कौन लिखिले जहार तुम कहो देखीदेल कौन जहार गोटे सब्जेक्ट आ गोटे प्रेडिकेट थी ताको हमें कौन कहबा ना सिंपल प्रपोजिशन सर दे तो ना सेदिन मु पूछि दउछ अपन थैंक यू अच्छा जहार गोटे सब्जेक्ट एंड गोटे प्रेडिकेट थी ताको हमें की प्रपोजिशन कहबा सिंपल प्रपोजिशन तो एठी केते सारा प्रपोजिशन लिखाले जेमिति कि ऑल मेन आर मोर्टल हला आर गोटे सब्जेक्ट मेन आ कोन अछि मोर्टल स्टूडेंट गुड फ्लावर ब्यूटीफुल एगुड़ा सब कौन गोटे सब्जेक्ट और गोटे प्रेडिकेट अच्छे बुझेगा तो से की प्रपोजिशन कहगला सिंपल सिंपल प्रपोजिशन देन एबे आसीबा कंपाउंड प्रपोजिशन कौन लिखा ए प्रपोजिशन व्हिच एक्सप्रेस एडे लिखि दोची ए प्रपोजिशन इज एक्सप्रेस अच्छा ए प्रपोजिशन इज एक्सप्रेस a relation between single subject and more than one predicate
relation between single subject and more than one predicate, or between more than one subject, or between more than one subject, or single predicate, more than one subject and single predicate, or between more than one subject, or between more than one subject and more than one predicate, more than one subject or more than one predicate is a compound proposition. Is a compound proposition. Full stop. A compound proposition are broken. A compound proposition are broken down into two or more simple proposition. देखो ये कंपाउंड प्रपोजिशन कौन कहला जहार देखिल देख कंपाउंड प्रपोजिशन होची सेटा कौन हेतिबो गोटे प्रपोजिशन व्हिच एक्सप्रेस ए रिलेशन बिटवीन ए सिंगल सब्जेक्ट गोटे सब्जेक्ट हेतिबो मोर देन टू प्रेडिकेट थिबो नहेले कौन हेतिबो मोर देन टू सब्जेक्ट थिबो किंतु गोटे प्रेडिकेट हेतिबो नहेले मोर देन टू सब्जेक्ट हेतिबो मोर देन टू प्रेडिकेट हेतिबो जदि दुई रु अधिक प्रेडिकेट अछि दुई रु अधिक सब्जेक्ट अछि किंबा गोटे सब्जेक्ट थिबो दुई रु अधिक प्रेडिकेट थिबो किंबा गोटे प्रेडिकेट थिबो दुई रु अधिक सब्जेक्ट थिबो ताकू हमें कोन कहि परिबा कंपाउंड प्रपोजिशन गोटे कंपाउंड प्रपोजिशन को जदि हमें भांगीबा दुई रु अधिक सिंपल प्रपोजिशन पाइबा बोली कहा जाय तो आमे कोन जानले कंपाउंड प्रपोजिशन रो अधिक सब्जेक्ट भी थाई पारे अधिक प्रेडिकेट थिले ताकू हमें कोन कहबा कंपाउंड प्रपोजिशन तो एग्जांपल एबे बुझिबा देखो एडी कोन कहैसी एग्जांपल both Indian men and women are doing well in the international firm. बुझिए ना कल लिखिले बोथ इंडियन मेन एंड वोमेन एठी देखो सब्जेक्ट यार दिटा आसुजे गोटे मेन और वोमेन आर डूइंग वेल इन द इंटरनेशनल फॉर्म एठी कोन एठी गोटे कंपाउंड प्रपोजिशन काहे कि एंड द्वारा कोन जोडी है वोमेन आर माने फास्ट हमें कहि परिबा इंडियन मेन तब इंडियन वोमेन हला आर डूइंग द इंटरनेशनल फॉर्म तो एटा को हम कोन करि परिबा डेटा सिंपल सेंटेंस रे भांगी परिबा कौन करि परिबा ताले इंडियन मेन आर डूइंग वेल इन द इंटरनेशनल फॉर्म इंडियन वुमेन आर डूइंग द वेल इन द इंटरनेशनल फॉर्म डेटा सिंपल सेंटेंस रे आकु भांगी परिबा कोटा को गोटे कंपाउंड सेंटेंस बुझियला बुझि पालो एते केतेटा सब्जेक्ट अछि मेन और वुमेन तो दुटा सब्जेक्ट अछि हां देन आमे जिबा कंपाउंड प्रपोजिशन से कौन है कन्स्टिट्यूट है अफर्मेटिव इज कॉल्ड हाँ कंपाउंड प्रपोजिशन जदि पॉजिटिव कथा कहूँ ताले सेटा को कौन कह ना कपुलेटिव प्रपोजिशन कह जदि नेगेटिव कथा कह जाउची ताले सेटा रिमोटिव प्रपोजिशन कह आमे आगे कौन कले को गोटे कंपोज सॉरी कौन थिला एटा प्रपोजिशन कंपोजिशन थिला ना कंपोजिशन दृष्टि प्रपोजिशन को दुई भाग रे डिवाइड कराइतला गोटे होचे सिंपल
गोटे कंपाउंड सिंपल प्रपोजिशन कौन थी जार गोटे सब्जेक्ट एंड गोटे प्रेडिकेट थी आम सिंपल सब्जेक्ट को सिंपल प्रपोजिशन कहते कंपाउंड कौन कहते जार गोटे सब्जेक्ट थी कि अधिक प्रेडिकेट थी कि गोटे अधिक सब्जेक्ट थी कि अधिक प्रेडिकेट थी आम कौन कहते कंपाउंड प्रपोजिशन गोटे कंपाउंड प्रपोजिशन को जब आम भांगुंट दुईटार अधिक सिंपल सेंटेंस पाउचंती पुणी कहते से कंपाउंड प्रपोजिशन जदि पॉजिटिव अच्छी ताहले सेटा होची कपुलेटिव जदि सेटा नेगेटिव अच्छी ताहले सेटा रिमोटिव बुझेला बुझेला कि तो आम जाना कंपाउंड प्रपोजिशन पॉजिटिव को वे कहूँ आ नेगेटिव को वे कहूँ तो ए लिखाओ ए कंपाउंड प्रपोजिशन लिख ए कंपाउंड प्रपोजिशन से कंपाउंड प्रपोजिशन एटा सब डिवाइडेड करा जाय ए कंपाउंड प्रपोजिशन इन व्हिच a compound proposition in which all the constituent proposition are affirmative all the constituent proposition are affirmative is called copulative proposition यदि कंपाउंड प्रपोजिशन पॉजिटिव बा अफर्मेटिव अफर्मेटिव माने पॉजिटिव ले अछि ताले ताको को आजिबो कपुलेटिव प्रपोजिशन एग्जांपल राम एंड सैम आर इंटेलिजेंट एटा पॉजिटिव अच्छी कि नेगेटिव अच्छी पॉजिटिव अच्छी आ एटा कंपाउंड सेंटेंस कि नुहे कारण कोन आरो दुईटा सब्जेक्ट अच्छे राम और श्याम दुईटा सब्जेक्ट अच्छे से हमें कौन कहले एटा कंपाउंड सेंटेंस आ एटा पॉजिटिव वे कहे राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट बुझेला से को की प्रपोजिशन को आगला ना कपुलेटिव तापर लिखो देखि देलो देखो ए कंपाउंड प्रपोजिशन इन व्हिच a compound proposition in which all the constituent proposition are negative a constituent proposition are which all the a compound proposition in which all the constituent proposition are negative is called remotive proposition remotive proposition the example Ram is neither clever nor intelligent से क्लेबर नुहे कि इंटेलिजेंट नुहे बुझला नेगेटिव कथा को जाय से एटा की प्रपोजिशन रिमोटिव प्रपोजिशन तो ये दुईटा सिंपल सेंटेंस हो पार कि नहीं कौन हो पार कहला इंटेलिजेंट वेरी गुड देन एटे तुम थिला कंपोजिशन दृष्टि प्रपोजिशन क्लासिफिकेशन देन आमे जिबा एबे अकॉर्डिंग टू क्वालिटी देखो क्वालिटी दृष्टि प्रपोजिशन को दुई भाग में डिवाइड होती गोटे हूँ अफर्मेटिव आ गोटे नेगेटिव माने पॉजिटिव और नेगेटिव पेपर लिख अकॉर्डिंग टू क्वालिटी द प्रपोजिशन एटा लिखि दउछ तुमको जदि किए पचारे तुम कहि परिबो the classification according to quality likha according to quality the proposition are classified into affirmative
according to according to quality the proposition are classified into affirmative and negative proposition. Then janiba affirmative and negative proposition कौन. तो लिखा affirmative first लिखी के लिखो affirmative proposition. A proposition in which the predicate a proposition in which the predicate affirm something about the subject is called affirmative proposition. Predicate affirm something about the subject is called affirmative proposition. In such proposition there is a positive there is a positive relation between subject and predicate. Such proposition there is a positive relation between subject and predicate. Example, some students are diligent. देखो affirmative proposition लिखि देला समस्ते कौन कहला affirmative proposition आमे ताको कहबा जी कौन करथो प्रेडिकेट रो किछि affirm करथो ताले आमे ताको कौन कहबा affirmative proposition सेटा कौन होतो पॉजिटिवली थिबो से कौन कहउछन देखो ए proposition which the predicate is affirm something about subject सब प्रेडिकेट जदी काहा को affirm करथबो सब्जेक्ट रो किछि जदी affirm करूची ताले हमें ताको कोन कहबा affirmative proposition बोली कहबा आ से कोन कहउची सेडे को बळे रिलेशन there is a positive relation between subject and predicate subject और predicate भीतर जदी किछि positive relation अछि ताले तमे कोन कहउछ सेटा affirmative proposition देखो एटी हमें कहले some student are diligent बा एटी हम तमे कहि परबो some student are intelligent हला some student are intelligent जदी हमें कहउचंदी हला तो कौन कहले एठी पॉजिटिव वे रे कहले कि नहीं इंटेलिजेंट ता प्रेडिकेट ता अफर्म कला खा को सब्जेक्ट को किछि स्टूडेंट कोन अछंती जो माने इंटेलिजेंट अछंती बा जो माने इंटेलिजेंट नो हंती तो कहले तो कोन अछि कोन प्रेडिकेट ता का को अफर्म कला सब्जेक्ट को तो केमिति अफर्म कला ना पॉजिटिवली एठी कोन कहले देयर इज ए रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को रिलेशन पॉजिटिव रिलेशन एठी किछि नेगेटिव अछि कि तो एटा को कहा जीवो को प्रपोजिशन अफर्मेटिव प्रपोजिशन देन हमें नेगेटिव जीवा सेम नेगेटिव रे कोन तमे ताले बुझिबो नेगेटिव रिलेशन का भीतर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो लिखो नेगेटिव प्रपोजिशन ए प्रपोजिशन इन व्हिच the predicate is denied a proposition in which the predicate is denied लिख लो a proposition in which the predicate deny of the subject is called negative proposition. Predicate deny of the subject is called negative proposition. In such a proposition there is a negative relation between subject and predicate. In such proposition there is a negative relation between the subject and predicate.
negative relation between subject and predicate. तो example नबा, example say some student नबा, example some student are not intelligent. पर ये कही परिबा no man is mortal एक्सेट्रा. एगुड़ा सब कौन ना नेगेटिव प्रपोजिशन. जदि किसी प्रेडिकेट किसी नेगेटिवली आसर्ट करुच्ची तो आम कौन कहवा नेगेटिव प्रपोजिशन कहवा. बुझला. तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भितर को रिलेशन थी ना नेगेटिव रिलेशन थी तो आम नेगेटिव कहवा. आ तुम एमती भी जापर जो प्रपोजिशन किसी नेगेटिव टर्म नो नट एगुड़ा थी तुम जान से कौ प्रपोजिशन नेगेटिव प्रपोजिशन. बुझेगा बुझिपार किसी डाउट्स तो लिखि दियो. तो ये खाली गोटे पॉइंट लिख द नेगेटिव एलिमिनेट इज टेकन द नेगेटिव एलिमिनेट इज टेकन the negative eliminate as is taken as the part of predicate. The negative eliminate as the negative eliminate is taken as the part of predicate. The negative eliminate is taken as the part of predicate are called as infinite proposition. इनफाइनाइट प्रपोजिशन. बुझे यहाँ आम देखी कपुलारे नेगेटिव जब प्रेडिकेट बसुला आम कौन कहते नेगेटिव कौटी बसुला प्रेडिकेट माने नॉट डैश जो लगे कहते से आम कौन कहवा ना इनफाइनाइट. माने जदि ये प्रपोजिशन थी धर आम कहले गुड तुम गुड लिखिल जदि नॉट डैश गुड लिखुच ताहले सेटा मध्ये गोटे पॉजिटिव बा इनफाइनाइट प्रपोजिशन को कह. तो एमती नॉट डैश से लगाऊँ से कि प्रपोजिशन कहुच्छे ना इनफाइनाइट प्रपोजिशन. कारण ना प्रेडिकेट पाखरे जदि नॉट डैश एमती लगी आम कह पॉजिटिव कह इनफाइनाइट प्रपोजिशन बोली कह. प्रेडिकेट पाखरे जदि किसी नेगेटिव पार्टिकल्स लगी तो ये इनफाइनाइट प्रपोजिशन. देन क्वालिटी ऑफ प्रपोजिशन केते भागरे थिला कौन कौन अफर्मेटिव ना अफर्मेटिव नेगेटिव क्वांटिटी आसिले यूनिवर्सल पर्टिकुलर है. तो अफर्मेटिव कौन थी कहूँ जब कि पॉजिटिव रिलेशन जनाऊँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भितर ताले से अफर्मेटिव. नेगेटिव कौन कहूँ बुझे ना क्लियर. कंपोजिशन प्रपोजिशन केतेटा कौन कौन सिंपल एंड कंपाउंड. देन अकॉर्डिंग टू तापर कौन आसो क्वांटिटी है. क्वांटिटी दुईटा प्रपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट गोटे हूँ यूनिवर्सल आ गोटे पर्टिकुलर यूनिवर्सल और पर्टिकुलर. तो देख लेख अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी आज 3टा पढ़ते नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी. के पानी पानी पिछे कह खाओ ना पीबी लिखला. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी लिखा. अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी द प्रपोजिशन आर क्लासिफाइड इनटू according to quantity the proposition classified into particular and universal into particular and universal. Are classified into particular and universal proposition. तापर universal proposition कौन लिख
हाँ ताले चले क्वांटिटी हिसाब से प्रपोजिशन केते भाग डिवाइड कराई दुई भाग गोटे होचे यूनिवर्सल गोटे पर्टिकुलर तो यूनिवर्सल कौन लिखाओ यूनिवर्सल प्रपोजिशन देखिक लिखाओ ए प्रपोजिशन इन व्हिच यूनिवर्सल प्रपोजिशन लिख लिखो ए प्रपोजिशन इन व्हिच predicate is affirm or deny predicate is affirm or deny of the entire denotation of the subject entire denotation of the subject is called universal proposition. Entire denotation of the subject is called universal proposition. सुना से कौन कहते आम यूनिवर्सल कौन कहवा जदि प्रेडिकेट आफान करिथिबो कि डिनाय करिथिबो ऑफ द एंटायर डेनोटेशन ऑफ द सब्जेक्ट को जदि एंटायर डेनोटेशन करेछि सब्जेक्ट डिनाय करथौ एंटायर डिनाय करथौ किबा एंटायर आफर्म करथौ ताको आमे कोन कहउचंदी यूनिवर्सल प्रपोजिशन जदि एंटायर डिनाय करथौ यूनिवर्सल पुणी दि प्रकार अछि गोटे यूनिवर्सल अफर्मेटिव गोटे यूनिवर्सल नेगेटिव जदि पूरा एंटायर आफर्म करूची ताले सेटा होची यूनिवर्सल अफर्मेटिव जदि एंटायर डिनाय करूची ताले सेटा होची यूनिवर्सल नेगेटिव तो सेटा में बुझिबा तो बुझिला कोन लिखिला ए यूनिवर्सल प्रपोजिशन ना ए प्रपोजिशन इन व्हिच प्रेडिकेट इज अफर्म और डिनाय ऑफ द एंटायर डेनोटेशन ऑफ द सब्जेक्ट जदि एंटायर डेनोटेशन ता सब्जेक्ट आइदर से कोन हेतिबो ना अफर्म करिवो ना डिनाय करिवो ताले हमें ताको सेटा को कौन कहते यूनिवर्सल प्रपोजिशन कहते देन लिख ए यूनिवर्सल प्रपोजिशन इन व्हिच ए यूनिवर्सल तले लिख दो ए यूनिवर्सल प्रपोजिशन इन व्हिच ए यूनिवर्सल प्रपोजिशन इन व्हिच द प्रेडिकेट इज अफर्म ए यूनिवर्सल प्रपोजिशन इन व्हिच the predicate is affirm of the subject the subject is called universal affirmative proposition universal affirmative proposition प्रेडिकेट जदि आफर्म करुच्ची क्या को सब्जेक्ट को ताहले ताको हमें कौन कहूचे यूनिवर्सल अफर्मेटिव तो एग्जाम तार फॉर्म होची बाय इट्स फॉर्म होची ऑल एस इज पी जदि ऑल एस इज पी आसुची ताहले तमे कौन कहबा एटा एस होची सब्जेक्ट पी होची प्रेडिकेट हैला जदि आसुची ए भली ऑल जदि लागिथिबो ताहले सेटा कौन कहबा यूनिवर्सल अफर्मेटिव तो एग्जांपल तो कॉन्क्रीट एग्जांपल देले कौन हम ऑल मेन आर मोटार तो ये कौन हो प्रेडिकेटा पॉजिटिव वेले कहूँ से कौन कहला यूनिवर्सल अफर्मेटिव बुझीगला तो तापर लिख ए यूनिवर्सल प्रपोजिशन इन व्हिच लिखि देलो एग्जांपल लिख ए यूनिवर्सल प्रपोजिशन इन व्हिच प्रेडिकेट is deny the subject a universal proposition in which the predicate is deny of the subject is called universal negative proposition. It is the form of no SHP. A universal proposition in which the predicate deny of the subject is called universal negative proposition. It is the form of no SCGP. Negative देखले कौन हबो ना no crow are
No crow is green. देखिदेल से कौन कहे आम जानले यूनिवर्सल प्रपोजिशन हाँ हाँ आम प्रपोजिशन अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी हिसाब से कौन अच्छे दुई प्रकार गोटे हूँ कौन यूनिवर्सल पर्टिकुलर यूनिवर्सल कौन कौन से जब प्रेडिकेट एंटायर डेनोटेशन डिनाई कर अफर्म कर सब्जेक्ट को ताले आम कौन कहे यूनिवर्सल प्रपोजिशन जदि सब्जेक्ट को एंटायर डेनोटेशन करफर्मेटिवली कौन से यूनिवर्सल अफर्मेटिव जदि डिनाई करें कौचे यूनिवर्सल नेगेटिव यूनिवर्सल अफर्मेटिव रो फॉर्म कौन ऑल एसजीपी माने तुम ये जान ऑल जोटी थी माने ऑल जगह सब्जेक्ट क्षेत्र में जहाँ था जदि ऑल अच्छी ताले से कौन कह यूनिवर्सल अफर्मेटिव जदि नो अच्छी ताले यूनिवर्सल नेगेटिव बुझेगा क्लियर देन एबे पर्टिकुलर को जीवा टाइम अच्छे तो लिख पर्टिकुलर यूनिवर्सल then particular लिखो particular form a proposition in which a proposition in which predicate is affirm or deny predicate is affirm or deny of a partial denotation of a subject denotation of a subject is called partial affirm or deny of a partial denotation of the subject partial denotation of a subject is called particular proposition particular proposition दीटा अच्छी गोटे हूँ particular affirmative आ गोटे particular negative लिख लो कौन लिख लो ना affirm or deny of a partial denotation of a subject is called particular proposition तापर लिखो a particular proposition in which a particular proposition in which the predicate is affirm a particular proposition in which predicate is affirm of the subject predicate is affirm the subject is called particular affirmative proposition particular affirmative proposition it is the form of sum SHP बा कहि परिबा some men are honest form it is the form sum SHP देख पर्टिकुलर प्रपोजिशन कौन कहला से कौन हेतिबो पार्शियल डेनोटेशन हेतिबो जदी पार्शियल डेनोटेशन हेतिबो कहा को सब्जेक्ट किबा प्रेडिकेट माने कौन करथिबो ए प्रपोजिशन इन व्हिच प्रेडिकेट अफर्म और डिनाय प्रेडिकेट अफर्म हेतिबो किबा डिनाय हेतिबो कोन पार्शियल डेनोटेशन मतलब पार्शियल डेनोटेशन माने किछि कथा जदी कहउतबो का विषय ना सब्जेक्ट विषय रे से पॉजिटिवली हो कि नेगेटिवली हो ताको हमें कौन कहबा ना पर्टिकुलर प्रपोजिशन कहबा जदि पॉजिटिव कहूची ताले पर्टिकुलर अफर्मेटिव माने किछि रो जदि सब प्रेडिकेटटा किछि कहूची सब्जेक्ट विषय रे सेटा पुनी पॉजिटिवली ताले सेटा माने पर्टिकुलर अफर्मेटिव जदि किछि कहूची नेगेटिवली ताले सेटा पर्टिकुलर नेगेटिव तो तार फॉर्म पर्टिकुलर अफर्मेटिव रे फॉर्म होची सम एसएच पे तार कंक्रीट एग्जांपल होची सम मेन आर ऑनेस्ट ठीक है तापर लिख ए पर्टिकुलर प्रपोजिशन व्हिच प्रेडिकेट इज डिनाई द सब्जेक्ट ए पर्टिकुलर प्रपोजिशन इन व्हिच प्रेडिकेट इज डिनाई द सब्जेक्ट is called as particular negative proposition deny as the subject is called particular negative proposition
negative proposition. It is the form of sum A C is not P. It is the form of sum A C is not P. तार लिखि दियो concrete example, some men are not honest. बुझे ना कौन हो प्रेडिकेटा जदि डिनाई करुचे ताले कौन कहूँ से पर्टिकुलर नेगेटिव. तो ये आम जानले प्रपोजिशन होची माने क्वांटिटी ऑफ प्रपोजिशन होची दुईटा गोटे हूँ यूनिवर्सल गोटे पर्टिकुलर. यूनिवर्सल प्रपोजिशन पुणी केतेटा कौन कौन यूनिवर्सल अफर्मेटिव रो फॉर्म कौन यूनिवर्सल नेगेटिव रो फॉर्म कौन नो एसजीपी. देन आसवा पर्टिकुलर पर्टिकुलर कौन कहूँ जब आफर्म करथो कि डिनाई करथो कौन पार्शियल है प्रेडिकेटा जब पार्शियली डिनाई कर सब्जेक्ट को ताहले आमे तो कहूँ पर्टिकुलर. से पर्टिकुलर मैं देख जदि प्रेडिकेटा पूरा होली सपोर्ट करुच्ची पूरा फुल कथा कहूँ क्या विषय रे सब्जेक्ट विषय रे ताहले सेटा होची पर्टिकुलर सेटा होची यूनिवर्सल. जदि पार्शियल पार्शियल माने किछि कथा कहूँ जमी सम कथा कहूँ है पार्शियल माने कौन किछि कम कथा कहूँ अल्प किछि कहूँ ताहले सेटा होची पार्शियल. से सब माने प्रेडिकेटा कौन कहूँ सब्जेक्ट विषय रे जदि किछि कथा कहूँ जमी सम सम मेन आर मोर्टाल माने किछि मनीष होची मरणशील है ना. मोर्टाल होची प्रेडिकेट से प्रेडिकेटा क्या कहूँ ना सम मेन को से कहले ना पार्शियल डेनोटेशन करुच्ची पार्शियल पॉजिटिवली कहूँ तो सहीटा को कहगला ना पर्टिकुलर. से पर्टिकुलर प्रपोजिशन पुणी दुई प्रकार कौन कौन से पर्टिकुलर अफर्मेटिव रो फॉर्म कौन पर्टिकुलर नेगेटिव रो क्लियर. तो एग्जांपल कंक्रीट एग्जांपल दे परिबा किछि भी आनी दबो सम टेबुलर ब्लैक सम टेबुलर नॉट ब्लैक तम सम बुक्स आर रीडेबल के कहि परिबा एमती किछि भी है ना किछि आनी तुम लगे कहि परिबा. देन आसीबा तमरा माने एटा थिला तमरा प्रपोजिशन होची दुई प्रकार माने क्वांटिटी हिसाब रे प्रपोजिशन होची मेनली दुई प्रकार. तो आउ किछि प्रपोजिशन अछि सिंगुलर प्रपोजिशन एंड हाँ सिंगुलर प्रपोजिशन गोटे अच्छे से सिंगुलर प्रपोजिशन कौन टी जानिबा. लेख सिंगुलर प्रपोजिशन मैंने सिंगुलर प्रपोजिशन पर थाउ एति ना देखो सिंगुलर प्रपोजिशन लिखना सिंगुलर प्रपोजिशन. तो से लिख ए प्रपोजिशन इन व्हिच a proposition in which the predicate is sorry a proposition in which the predicate is affirm or deny of the individual of one individual affirm or deny of one individual an individual taken as the subject is called singular proposition. सब्जेक्ट सिंगुलर प्रपोजिशन. तो ये बुझा शुण कौन कहूँ प्रेडिकेटा जदि आफर्म कर डिनाई कर ना गोटे इंडिविजुअल को ताहले ताको आमे कौन कहबा ना सिंगुलर प्रपोजिशन. जदि प्रेडिकेटा से पॉजिटिव को कि नेगेटिव को गोटे सिंगल इंडिविजुअल को ताहले आमे ताको कहबा सेटा सिंगुलर प्रपोजिशन है. तो कौन देखिबा एग्जांपल सिंगुलर प्रपोजिशन रो नबा द स्टूडेंट
is sincere. देखो पारिबा the day is hot. Ram is good. ये गोटे जनक कथा ही कह सिंगल स्टूडेंट गोटे दिन राम है ये कौन सिंगल इंडिविजुअल को निया जाउछि सेति पे कौन कहगला सिंगुलर प्रपोजिशन. तो से सिंगुलर प्रपोजिशन में भी यूनिवर्सल हो पार कि पर्टिकुलर हो पार बुझीगला. तो सिंगल डे विषय कह जाए सिंगल इंडिविजुअल कथा कहूँ से कौन कह सिंगल प्रपोजिशन. तो मु कहबी द ट्री ये कौन हम सिंगुलर ना पर्टिकुलर सिंगुलर ना यूनिवर्सल. द ट्री यूनिवर्सल. द ट्री मु को ट्री कथा कहूँ है जदि मु कहबी दिस मैंगो ट्री बुझला यही मैंगो ट्री पर्टिकुलर मु तुमको देखी यही मैंगो ट्री बुझला. द ट्री कहीदेले से यूनिवर्सल हो तो से लिखाई देख द सिंगुलर प्रपोजिशन मे बी यूनिवर्सल और पर्टिकुलर. कौन डाउट किसी रहा कौन भावुच तो ये लिख द सिंगुलर प्रपोजिशन मे बी यूनिवर्सल और पर्टिकुलर. सिंगुलर प्रपोजिशन में भी यूनिवर्सल और पर्टिकुलर. ए सिंगुलर प्रपोजिशन इज यूनिवर्सल. सिंगुलर प्रपोजिशन इज यूनिवर्सल if the subject is a singular proposition is universal. A singular proposition is universal if the subject is definite singular term. Definite singular term. A singular proposition is universal. The subject is definite singular term. देख लो कौन कौन जब डेफिनाइट सब्जेक्ट सॉरी कौन कौन सिंगुलर प्रपोजिशन कौन होना ता सब्जेक्टा जब डेफिनाइट सिंगुलर टर्म मैंने गोटे निर्दिष्ट कथा को बुझाऊ ताहले आमे ताको कौन कहबा सेटा सिंगुलर प्रपोजिशन. देख ये कहले कि दिस बॉय is good. The sun is hot. बुझला एटा को आमे ताले कौन कहबे यूनिवर्सल. सन कहले सब माने सन हो गोटे से कौन कहगला यूनिवर्सल. दिस बॉय माने गोटे वाला माने कहउचंती सेते बेले कौन कहउचंती ए गुडा को यूनिवर्सल बोली कहउचंती बुझला. यूनिवर्सल माने आमे को सन सन तो गोटे है ना तो से यूनिवर्सल. तापर लिखी दो ए सिंगुलर प्रपोजिशन आ गोटे तो ए सिंगुलर प्रपोजिशन इज पर्टिकुलर. सिंगुलर प्रपोजिशन इज पर्टिकुलर if the subject is singular proposition is particular if the subject is an indefinite subject is an indefinite singular term. Indefinite singular term. Example, a man is